Good morning, friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome all of you to another interesting episode of Konexio HighFlyers. Friends, in these episodes, we try to introduce you emerging companies from emerging sectors, and talk to the managements of these companies about their business models, their growth journey, and future prospects. And today, friends, we got a very interesting company to talk to you in today's episode, and the company's name is Plada Infotech Services Limited. And we have the pleasure and the privilege of having Mr. Shailesh Damani, who's the managing director of the company. Shailesh ji, welcome to the show. Thank you very much for sparing your valuable time with us today. And I'm pretty sure that we'll have a very productive session and we'll be able to understand your company's operations much better. Avinash, thank you for hosting us on the show. It is an honor for me personally and to my entire company to be featured on the show. Really appreciate it and thank you so much for that. So, Shailesh ji, first question, which is very elementary, and when we before we deep dive into all the questions, is that if you could explain to us in a very simple way, what is the business model of our company, and as a promoter, how did this journey start? Like, how did you begin this company? What was the journey like? If you could share some inputs on this, that would actually help our viewers. So the company was started in 2010 as a placement and a data entry company. So the name Plada has been derived from placement, PLA from placement and DA from data entry. So this is how the name Plada has been derived. We started with a small team and with a very few people on board. And our first year, which was on 2010, we had a net revenue of only 18 lakhs. And at the end of 1923 or 2023, we end up at a 32 crores turnover. So this is how the journey has been started. We have evaluated and grown with our customers with new products, new ideas, new technology support to our customers, and so on. To give you the brief of what we do. So Plada Infotech, we specialize in delivering comprehensive business processing outsourcing model tailored for the clients. So specific needs, we offer end-to-end solutions like merchant acquisition, account management, field support, business correspondence, recruitment and payroll management, and software solution. Uh, Shailesh ji, now tell me one thing that in terms of the market positioning of our company, like we have been present for a very long time. What Hmm. is the market positioning of our company in the overall BPO market, and how big is the opportunity for us to grow over the next say 2 to 3 years? Can you give us some flavor on the overall size of the BPO market which you operate? How fast you think can it grow in the next say couple of years? So the BPO market size, from the present positioning point of view, our presence in it across 200 plus cities with 12 offices in 12 cities with a strength of 1400 plus employees. We work with major banks, fintechs, MNCs, and payment aggregators. The market overall market size is of 150 billion, and it is growing at 11%. And our growth is around 18 to 20% per year. Okay. And Shailesh ji, now tell me one thing that ever since 2010, when you started this company, and today we are in 2023, without giving names of your clients, if you could tell us, what are the number of active clients which you operate, and is there any, client concentration with regard to top 5 or top 10 clients, or is it a widely diversified customer base which you enjoy? So we are happy to share when we started in 2010 and onboarded customers from 2010, 11, 12. The customer base has been stickingness to us. So our major customers are MNCs, banks, fintech, startups, SMEs. And at present, we have our 13 loyal customers with us. And they have been associated with us since inception, whenever they have started the journey with us. Okay. I think that is very nice to know, Shailesh. Yeah. Shailesh, now tell me one thing. What is the percentage of repeat business from your existing customers? And on an average, every year, does the company have a strategy that you will be adding about 4 to 5 new customers? Is it this kind of approach that you follow, or you largely follow to determine your existing clients, with more of repeat business?
So we concentrate on having our existing clients and growing business with them in a diversified manner. So we concentrate largely on adding new products and with our existing customers. Yes, we have 20% new customers added who, when they start up and need our support. So many of the startups don't want to start with an outsource opportunity, but when they feel that they are ready for their in-house team, we support them in their starting stage of the customer. And Okay. and our customer, loyal customer and satisfied customers are huge. Okay. Okay. Right. Shailesh, now tell me one thing. Coming back to the pricing of the services which you offer, like are these customized based on the kind of requirements which you do to the customer on a customer to customer basis, or is there any standard kind of product category where you offer to the client? So pricing हमारे business में कैसे final होता है तो with the सर customer? हमारे प्राइसिंग बेसिकली हम टेलर मेड प्रोडक्ट ये देते हैं कस्टमर को, तो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डिजाइन करते हैं उनके नीड्स के हिसाब से. तो प्राइसिंग कोई फिक्स प्राइसिंग नहीं है. यस, कुछ सेगमेंट है जहाँ पे पेरोल मैनेजमेंट और ये वहाँ पे कोई फिक्स प्राइसिंग हो सकती है, पर बाकी सब जगह इट इज टेलर मेड. एंड क्योंकि हम नीच सेगमेंट में है तो द प्राइसिंग इज डिफरेंट फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट. Okay. Okay. And one more thing which I wanted to ask you is that business process outsourcing market तो बड़ा है. It is a very big market. What is the kind of competitive landscape like? Is the competitive intensity in the market very strong, or do you find that for your kind of niche services which you offer to the client, there are limited number of players who compete with us? इसके बारे में जरा थोड़ा बताइए. तो सर ऐसा है कि क्योंकि हमारे पास नीच एनवायरनमेंट पे हम काम करते हैं और हम टेलर मेड सॉल्यूशंस देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास कोई कंपटीशन नहीं है. तो हमारे 2-3 सेगमेंट्स में वी डोंट फील देयर इज अ कंपटीशन एट प्रेजेंट. Yes, in payroll management, there are big players, more big players. We have the late entrants, but due to our quality of service, the recruitment fast recruitment process, the support of technology based to our customers, we are still growing at a rapid pace in the payroll management also. Yeah, ठीक है. I think Shailesh ji very well articulated. Now tell me one thing, Shailesh ji, in terms of differentiation, like business process outsourcing, में we are a niche player. So what is it that we do so well that the customer is happy to stick with us for a long time? You said you got 13 customers who have been loyal customers. तो ऐसा हम क्या करते हैं कि जिससे कस्टमर को वैल्यू ज्यादा हमारी तरफ से लगती है? So if you could give us some qualitative points to highlight that, what is Plada doing better as compared to others? So basically हमारा रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म क्यों है, वी की क्वालिटी पॉइंट्स बोलने के लिए बोलूँगा तो पहला है कि वी प्रोवाइड देम टेक ड्रिवन सॉल्यूशंस फॉर देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स विद स्पीड, स्केल एंड रीच. ओके, दूसरा है कि हम काम करने के लिए नहीं करते सर. वी वांट आवर कस्टमर टू बी सेटिस्फाइड. वी ट्राई टू गिव बेस्ट ऑफ द मार्केट रीच टू आवर कस्टमर्स. वो हम समझते हैं कि हमारा क्वालिटी है. एंड माई टीम इज हैव अ डेडिकेटेड टीम फॉर माई ईच कस्टमर एंड दे आर 24/7 अवेलेबल फॉर देम. एंड एनी न्यू प्रोडक्ट they launch, we are there to support them from the day one without looking at what will be if the product doesn't grow. So we take that risk. ठीक है. I think very well said, Shailesh ji. Now tell me, Shailesh ji, on the financial side, we've seen that FY23 has been a very solid year. I think revenue has also improved. Your profit after tax has also jumped to 2.34 crores. Now, first of all, tell me what were the specific reasons for improvement in both the top line as well as profit? What were the contributing factors which saw such a good kind of performance? And going ahead, sir, 24 के लिए आप थोड़ा आउटलुक अगर शेयर कर सकते हो, इवन इफ यू डोंट मेंशन एज द न्यूमेरिकल नंबर्स, ब्रॉड आउटलुक 24 का कैसा लग रहा है? So after COVID, because 22 हमारा थोड़ा 21 was downsized. Again after COVID हमने वापस ग्रो किया. हमारा existing relationship
and strength, we were able to secure more business from our existing client, और जो because we are manpower intensified, तो हमने प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस करके अच्छा प्रोडक्टिविटी लाया, इसके लिए हमारे मार्जिन इंक्रीज हो गए। आगे के लिए सेम ग्रोथ वी आर एक्सपेक्टिंग, वी आर 18-20% जो ग्रोथ रेट चल रहा है वही हम चाहते हैं कि वो कंटिन्यू करे, और वी आर फोकस्ड ऑन दैट एंड वी आर श्योर टू अचीव दैट। Shailesh ji, one added question to this is, can we expect that these EBITDA margins which we have achieved in FY23, can these be comfortably sustained for the coming financial year? यहाँ पे कुछ improvement या at least stability हम देख सकेंगे? तो सर दो फैक्टर है इसको बढ़ाने के लिए। एक तो एग्जिस्टिंग कस्टमर सपोर्ट, ठीक है, दूसरा हमारी जो टीम है और जो अपना क्वालिटी ऑफ बिजनेस हमने प्रोडक्टिविटी जो हमने संभाली है, जिसपे हमने बहुत मेहनत की है कि प्रोडक्टिविटी कैसे इम्प्रूव कर सके। जब प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है तो नेचुरली ईबिटा बढ़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन रहेंगे, और वही चल रहा है, और हमारी पूरा फोकस है कि वही करके और थोड़ा और बेटर करें। Okay. Shailesh ji, now coming back to the most important question regarding your forthcoming IPO, if you could tell us, broadly, what is the objective of the IPO? How much money are you going to raise? And basically, sir, ये IPO कभी आने वाला है? इसके बारे में if you can, enlighten us. तो बेसिकली ये IPO 12.36 करोड़ का है। It is getting launched on the 29th, ओपन हो रहा है 29th को, और 4th को ये हो रहा है। इसका फंड्स यूजेज है वर्किंग कैपिटल साइकिल का, कंपनी के वर्किंग साइकिल बढ़ाने के लिए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक लैपटॉप्स और ये करने के लिए, और कुछ अनसिक्योर्ड लोन्स को क्लोज करने के लिए। ओके, एक बात बताइए शैलेश जी, हमारे बिजनेस में वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना लंबा होता है? लाइक नॉर्मली व्हाट इज द काइंड ऑफ साइकिल टाइम वेयर यू एक्सपेक्ट कलेक्शंस फ्रॉम योर डेटर्स? क्योंकि देखिए हमारे धंधे में तो इन्वेंट्री तो होगी नहीं, हम सारा काम डेटर से ही करते हैं, तो ये डेटर का साइकिल मोटा मोटी कितना बड़ा होता है? सर ये 30 से 35 दिन का होता है, ठीक है। प्लस वर्किंग साइकिल में हमको कुछ मैन पावर जब हम नया एडिशन करते हैं तो उसका ट्रेनिंग, उसको प्रोडक्टिविटी लाने के लिए, वो हमारा मेजर कंट्रीब्यूटर होता है वर्किंग कैपिटल नीड का। ओके, आई वाज आस्किंग शैलेश जी कि अभी पब्लिक इशू होगा, आपके नए शेयर होल्डर्स विल जॉइन यू एज पब्लिक शेयर होल्डर्स। तो सर एज अ प्रमोटर आपने बहुत मेहनत करके 2010 से ये कंपनी खड़ी की है, तो मैं चाहूंगा कि सर आपका विजन और मैसेज ये शेयर होल्डर्स को क्या होगा लॉन्ग टर्म में? सर आप इन शेयर होल्डर्स को कैसे रिवॉर्ड करो? तो बेसिकली ये मेरे इट इज अ चाइल्डहुड ड्रीम बोलिए आप, मेरे खुद की मेहनत का ये फल है जो हमने 2010 से अभी यहाँ पे पहुँचा है। मैं हमारे अपने शेयर होल्डर्स जो आने वाले हैं उनको इतना आश्वासन दे सकता हूँ कि इसको डेफिनेटली हम ग्रो करेंगे। जो स्टेप बाय स्टेप हम ग्रोथ दिखा रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन हमने अभी कुछ, क्योंकि हम इस धंधे को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो हम इसके लिए नए नए टूल्स ला रहे हैं। मर्चेंट को क्या सपोर्ट चाहिए, उसके पेन पॉइंट्स क्या है, छोटे मर्चेंट स्पेशली जो बड़े कंपनियों के साथ कंपटीशन में बहुत तकलीफ झेल रहे हैं, उनको हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं, वैसे प्रोडक्ट्स हम ला रहे हैं। तो ग्रोथ डेफिनेटली हमारे साथ है, ये मेरा विजन है। बिल्कुल। चलिए जी, आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन इज, नाउ इन एवरी बिजनेस एज वी अंडरस्टैंड सर, धंधे में, हर धंधे में कोई ना कोई रिस्क होता है। Like, if you can tell us, Shailesh ji, in our business, what is the single most risk? And of course COVID was a very abnormal risk which affected everybody, लेकिन कोविड के अलावा सर हमारे धंधे में सबसे बड़ा रिस्क क्या है और उस रिस्क को हम लोग कैसे मिटिगेट करते हैं, इसके बारे में बताइए। हाँ, तो हम जैसे कि आपको पता है हम लोग बैंक्स, फिनटेक्स, एसएमईज के लिए काम करते हैं। तो अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आता है, ठीक है, वो मेरे हिसाब से हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन सकता है, पर वो हमको लगता नहीं है क्योंकि हर जगह आउटसोर्सिंग बढ़ रही है। हर एक को अपने कॉम्पिटेंट बिजनेस पे ही काम करने का ये है कि भाई सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, उसको बाकी सेल्स का आइडिया नहीं है, उसको मैन पावर का आइडिया नहीं है, और लोग अभी चाहते हैं कि हम अपने खुद के जो हमारा कॉम्पिटेंस है उस पर ध्यान दें, बाकी आउटसोर्स करें। बिल्कुल, आई थिंक आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया शैलेश जी। आई थिंक थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।
Friends, we could understand the company's operations in a very nice way from Mr. Shailesh. Shailesh ji, once again, thank you and best wishes to you, your entire management team. और सर आपके forthcoming IPO के लिए भी हमारी best wishes. Thank you very So much. thank you, Avinash ji. Thank you for hosting us on the show. Thank you.